Hello viewers, welcome you all to my new video. Our today's video is about the third unit of The Portrait of a Lady. This story, Portrait of a Lady, is written by famous Indian journalist and famous Indian novelist Khushwant Singh. In this particular unit, third unit, we will discuss how the writer Khushwant Singh spends his childhood days in the city house. In our previous video, we have discussed about the second unit of this particular chapter, in which we come across how our writer spends his quality time with his grandmother during his childhood days in the village. आमर पूर्व वीडियो रे जोटा कि यूनिट 2 पर आमे वर्णना करिथलु डिस्कशन करिथलु सेथिरे आमे जानिबा को पाइलु राइटर वर्णना करूछंती से केमिति तांकर क्वालिटी टाइम तांकर जेजेमांक सहित विलेज रे बितौथले. ओके, एंड से कहउछंती कि जेतेबेले तांको पितामाता माने सहर रे बसवास करिया पई चली जाइथिले तांकु तांकर जेजेमांक पाखरे छाडी चली जाइथिले एंड जेजेमा तांकर सबु केयर नौथले. ओके, मॉर्निंग रे जेजेमा तांकु रेडी करी दउथले स्कूल जीवा पाई एंड तांकु बसौथले निज पाखरे. मॉर्निंग प्रेयर्स कला बेले जेजेमा खुशवंत सिंह को निज पाखरे बसौथले एंड से चाहूथले कि तांकर नाती खुशवंत सिंह से जो प्रेयर टाकू मुखस्त करू. ओके, तापरे जेजेमा तांकु कोन करूथले स्टेल चपाती बासी रोटी जोडा थिला तांकु देकी स्कूल को पठे दउथले एंड निजे भी. Okay, his grandmother also accompanied with him to the school. जेजेमा निजे भी तांको सहित स्कूल को जाउथले. ओके, एंड तार कारण थिला कि स्कूल पाखरे मंदिर थिला. ओके, आमे कहि परिबा से पंजाबी थिले गुरुद्वार थिला. ओके, जोठी कि जेजेमा निजे गुरुद्वार रे बसी कि होली स्क्रिप्चर ग्रंथ साहेब पढुथले एंड से गुरुद्वार जे प्रीस्ट थिले से खुशवंत सिंह कर टीचर थिले जे कि खुशवंत सिंह का भलिया पिला माननकु अल्फाबेट सिखौथले ता सहित मॉर्निंग प्रेयर भी सिखौथले. ओके, तो खुशवंत सिंह कर जते बडे पाठ पढाटा सरी जाउथला व्हेन ही वाज फिनिश्ड विथ हिज स्टडीज एंड ग्रैंडमदर आल्सो फिनिशेस हिज रीडिंग ऑफ होली स्क्रिप्चर, दैट टाइम दे बोथ accompanied with each other and come to home. ओके, एंड ऑन द वे बाटरे से माने जो ग्रैंडमा स्टेल चपाती किछि नेकी जाई थांती कुकुर मानकु दबा पाई सेटा से माने पकेकी देकी आसुथले. एंड लाइकवाइज खुशवंत सिंह स्पेंड्स वेरी हैप्पीली हिज चाइल्डहुड विथ हिज ग्रैंडमदर. ओके, एंड से जेतेबेले ग्रैंडमा का सहित रहिथिले से तांकर पितामातांकर अनुपस्थिति को से केबे अनुभव करू नथिले. ओके, ग्रैंडमदर तांकर बेस्ट पॉसिबल वे रे तांकर केयर नौथले. ओके, इतिको आमे सेकेंड यूनिट रे पढिथु. वर्तमान आमे थर्ड यूनिट को जीवा. थर्ड यूनिट रे आमे कोन आज डिस्कशन करिबा ता ऊपर छोटिया करी मु तुमको इंट्रोडक्शन पार्ट कहि देबी कि जस्ट तुमको गोटे लाइमलाइट देबी आलोकपात करिबा. तो जस्ट थर्ड यूनिट रे आमे जानिबा को पाइबा एठी राइटर कहउछंती से जेतेबेले विलेज छाडी कि शहर को आसीथिले पिला बेडे. ओके, जेतेबेले तांकर पेरेंट्स माने शहर रे सेटल हो जाइथिले तांकु डकई पठैथिले मींस ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडसन को ग्रैंडचाइल्ड को जस्ट डाकरा आसीथिला कि शहर रे आसिक रहिबा पाई. ओके, तो एठी से वर्णना करूछंती तांकर शहरी लाइफटा गाँर लाइफ ठारू केमिति डिफरेंस थिला. ओके, जो जो जिनिस से गाँ रे पाउथले सेटा से शहर रे पाइछंती कि नाही, से भाया फैसिलिटीज से भाया कंपेनियनशिप ग्रैंडमदर का जो गाँव रे से एंजॉय करुले सेटा सहर रे लाइफ रे एंजॉय करुछंती कि नाही. ओके, गाँव विलेज रो लाइफ केमिति थिला एंड सहर लाइफ केमिति थिला तांकर खुशवंत सिंह सेटा से कंट्रास्ट करुछंती एठी. ओके, एठी भी से वर्णना करिवे स्कूल लाइफ टाकु से इंग्लिश मीडियम स्कूल रे केमिति बितेइथिले, वेदर ही गेन समथिंग गुड knowledge from that school or not, what was the reaction of his grandmother when he was admitted in the English medium school. Such type of ideas we will get in this particular chapter. Okay, and apart from that we will come to know, okay, what is the reaction of grandmother. Okay, what is the reaction of grandmother towards the modern education of his grandchild. Okay, this we will discuss in this particular chapter. Okay, and just before going to chapter, I just would like to focus on
what is written in warm up. Okay, let's see what is written in warm up. Unit 3, warm up. Life in the village is quite different from life of city. We all know that village life बहुत different थाए city life सहित. ओके, तो ये राइटर कहले तुमको बताया चाहूँगी सिटी लाइफटा केमी बीतौले से विषय वर्णना करने जाऊँ. फैमिली रिलेशनशिप ऑल्सो चेंजेस, आइडेंटिटीज आर मॉडिफाइड. ओके, ऑब्वियसली आम विलेज रहा भितर जोटा कि आमर फैमिली मध्य कंपैशनेट भाव थाए, फैमिली मध्य जस्ट गोटे एफेक्शन बॉन्डिंग थाए, सेटा आम विलेज रे पाऊ किंतु सहर रे पाऊ ना. सहर रे सब जिन डिफरेंट थाए. सहर रे तुम न्यूक्लियर फैमिली देखिबो, बट विलेज रे जॉइंट फैमिली थाए. विलेज रे तुम नेबरिंग रे जो माने रोचंती से माने तुम क्लोज कंपेनियन थिबे, बट जेतेबेले सिटी रे रहिबो, तुम टाउन रे रहिबो, सेतेबेले तुम पड़ोसी भी तुम कथा किछि जानि पार नथिबो, तुम पड़ोसी रो कथा किछि जानि पार नथा. सच टाइप ऑफ लाइफ इज इन city life is completely busy life. Okay, all the individual they remain busy with their respective work, but in village they live like a large family in the village. Okay, you will get love, affection, compassionate, okay, in village life, but these are far away from a human being's life in the city life. Okay, city life रे समस्त निज निज जीवन बंचाई व्यस्त था, धाँ धपड़ करूँ, किंतु कहीं कहार नुहंती. ओके, ये सब चेंजेस थाए. ओके, एंड फैमिली रिलेशनशिप ऑल्सो चेंजेस. जो फैमिली रिलेशनशिप विलेज रे अलग प्रकार थाए, तार पुणी मॉडिफाइड होगी थाए. शहर रे रिलेशनशिपटा चेंजेस हो जाए, फैमिली रिलेशन चेंजेस हो जाए. ओके, आइडेंटिटीज भी मॉडिफाइड हो जाए. शहर रे बाबू जाए कि सहरिया बाबू ही जाती, सेठी सब आइडेंटिटीज भी चेंज हो जाए. There is a turning point in relationship. Read the following unit of the text and note how a turning point occurs in the writer's relationship with his grandmother. That means आमे कहिबा आमे बहुत एमती फैमिली देखिथिबा जो माने कि ताकर इनिशियल लाइफटा को गाँ रे बितेइथिबे, एंड जितेबेले से माने सहर को जाई कि हायर एजुकेशन पई जाई कि सेठी सेटल हो जाती, फैमिली नहीं कि सेटल हो जाती, से मानकर कनेक्शन विलेज रे जो माने तांकर रही जाइथिबे जस्ट फैमिली मेंबर की रही तांकर सहित कनेक्शन बॉन्डिंग टिके लूजन हो जाए. ओके, डिफरेंस क्रिएट हुए, टर्निंग पॉइंट से आसी जाए फैमिली रिलेशन रे. तो ये भी आम देखा खुशवंत सिंह को लाइफ रे केमती टर्निंग पॉइंट आसी थिला. तांकर रिलेशनशिप ग्रांडमदर सहित विलेज रे केमिति थिला, वेरी क्लोज थिला, वेरी स्ट्रांग बॉन्डिंग से एंजॉय करूथले ग्रांडमा सहित. बट जेतेबेले से विलेज को छाड़ी कि सहर रे रहिले ग्रांडमा सहित तांकर जो क्लोज बॉन्डिंग टा थिला से आस्ते आस्ते लूज होबा को लागला, बिकॉज ही गॉट लेस टाइम टू इंटरैक्ट विथ हिज ग्रांडमदर. ओके, से ग्रांडमा सहित इंटरैक्ट करने बहुत कम समय पाइथिले. ओके, कहीं से सिटी स्कूल जाऊे पढ़ाई मैक्सिमम टाइम से स्कूल रे डे टाइम स्कूल रे बीतौले, एंड इवनिंग रे किसी समय से ग्रांडमा सहित समय बीतौले. तथापि होमवर्क करने को पड़ूला, सब जिन करने को पड़ूला. तो आस्ते आस्ते जो बॉन्डिंग थिला ग्रांडमा सहित से स्नैप होगा लगिला, आस्ते आस्ते कमिबा को लगिला. ये सब विषय में आम डिस्कस करवा, थर्ड यूनिट डिस्कस करवा. तो लेट्स बिगिन विथ द टेक्स्ट ऑफ द थर्ड यूनिट. समस्त को गोटे रिक्वेस्ट, वीडियो को संपूर्ण देखला परे लाइक करने को भूलिबो नाही, सांग मान सहित शेयर करने को भूलिबो नाही. एंड जदि तुम कौन वीडियो रिलेटेड डाउट थाए, कौन कमेंट थाए, कमेंट सेक्शन वीडियो कमेंट सेक्शन रे देव. एंड लास्ट रे चैनल टाको सब्सक्राइब करिवो, बेल आइकन टाको क्लिक करिवो. ओके, एंड सब गुड़े निजर सपोर्ट जारी रख, जहाँद्वारा कि मु तुमको अलग अलग विषय न्यू विषय रे भी वीडियोटा अपलोड करी. यूनिट 3, the text. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. Here in this unit, the writer Khushwant Singh narrates how his bonding with his grandmother is gradually disturbing, because he left a village house and started living in the city house. Because when his parents were comfortably settled in the city and they call for
they sent for, that means semane jetebede tankor parents बापा माँ माने सिटी हाउस रे सेटल हो गले डकई पठेले जेजेमा को एंड खुशवंत सिंह को कि सिटी को आसी जीवा पाई तो ये से यही विषय रे वर्णना करिवे कि केमिति तांकर जेजेमा सहित जो संपर्कता थिला आस्ते आस्ते कमिवा को लागिला काहे कि बिकॉज ही गॉट लेस टाइम टू रिमेन विथ टच with grandmother. Okay, as you all know that in our previous unit that how the writer Khushwant Singh was closely attached with grandmother, and in the village grandmother was taking care and looking after of his grandson. Okay, and he was assigned to take care of his grandmother, and as well as he accompanied his son to school, okay, village school. Okay, and the writer said that his village life was a very memorable one, but that sorts of comfort, that sorts of things which were happen in the village, that is gradually diminishing in the city house, because in city he has to go to an English medium school by bus. Okay, and his grandmother could not accompany with him to the school. तो ये प्रॉब्लम कौन हुए कि जिते बड़े तांकर पिता माता माने सहर रे सेटल हो जाती से माने ग्रैंडमा को एंड ग्रैंड चाइल्ड को डकई पठाती तांकर जे सन थिले खुशवंत सिंह तांको डकई पठाउछंती सहर रे आसी रहिबा पाई. ओके, एंड एटी खुशवंत सिंह कहउछंती जदि बा आमे मु आ मोर ग्रैंडमा गोटे रूम रे रहुतलु सहर रे सत, किंतु से मते स्कूल छाड़िया को आसु नथिले काहेकि ना मु स्कूल जाउथली मोटर बस रे जाउथली इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पढ़िया पाई एडमिशन मु नै सारी थली. एंड जो क्वालिटी टाइम ग्रैंडमा विलेज रे स्पेंड करूथले डॉग्स मानन को, स्ट्रे डॉग्स मानन को, स्ट्रीट डॉग्स मानन को चपाती देकी रुटी देकी जो क्वालिटी टाइम टा स्पेंड करूथले से जिनसटा ग्रैंडमा को सिटी रे मिलिला नाही, जहाँ द्वारा कि ग्रैंडमा स्पैरो मानकर कंपानियनशिप रे रहिले. ओके, एंड स्पैरो माने तांकर कोर्टयार्ड को आसुथले, तांकर अगणा रे आसुथले, सिटी हाउस रो अगणा को आसुथले, एंड सेठी से ग्रैंडमा कोन करूथले खाद्यर खंड खंड रुटी रो खंड खंड करिके स्पैरो मानन को खाइबा को दउथले. नेक्स्ट पैराग्राफ को जिबा. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. तो ये ग्रेजुअली केमिति दी जनकर बॉन्डिंगटा, दी जनकर रिलेशनशिपटा आस्ते आस्ते से डिफरेन्स क्रिएट होची जानिबा. एज द इयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. तो राइटर कहते जमीती कि वर्ष बीती चलूला मोर ग्रैंडमा सहित देखा चाह भी कमी कमी गला कहीं जिते से हायर स्टैंडर्ड को से गति करा लगे मैक्सिमम टाइम से दिन बेला स्कूल रे बीतेवा लगे केवल संध्या समय घरे आसिक पहुँचिकी जहाँ ग्रैंडमा सहित भेट चाह होता. ओके, फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. किंतु ग्रैंडमा जो हैबिट थी से कौन परिवर्तन हो नाला. ग्रैंडमा जमी विलेज रे ग्रैंडसन को मॉर्निंग रू उठेकी स्कूल पर जावाई प्रिपेयर करूले, सेम ठीक से भाया सहर रे थिले भी बेले बेले ग्रैंडमा कौन करुले ग्रैंडसन को मॉर्निंग रे उठेकी गाधई पाधेकी स्कूल जावाई रेडी कर दौले. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. तो यूजुअली जिते बड़े खुशवंत सिंह स्कूल रू रिटर्न करुले घर को इवनिंग टाइम रे ग्रैंडमा तांको क्वेश्चन करुले कि कौन स्कूल रे तुमको पढ़ाई छी, व्हाट यू हैव टॉट इन द स्कूल. दैट टाइम ही रिप्लाइड दैट ही वाज टॉट इंग्लिश वर्ड्स एंड सम वेस्टर्न learning, western science and western teaching. Okay,
and like the laws of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. ओके जहाँ सब मॉडर्न जिनिस से पढ़ुले स्कूल रे से सब जिनिस से कहूले एंड फर्स्ट आम जाचु कि पूर्व यूनिट रू जाचु कि जिते बड़े से विलेज स्कूल रे पढ़ुले गाँव पंडितों पाखे से पढ़ुले से समय से अल्फाबेट शिखुले एंड प्रेयर्स लर्निंग करुले बट जिते बड़े से इंग्लिश मीडियम स्कूल को गले से मॉडर्न जिनिस से शिखा पाइले इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश वर्ड शिखा पाइले वेस्टर्न साइंस से कौन सब शिखा पाइले द लॉ ऑफ ग्राविटी ग्राविटीर लॉटा से शिखिले आर्किमेडिस प्रिंसिपल ओके द वर्ल्ड बीइंग राउंड वेस्टर्न स्कूल रे जते वेस्टर्न साइंस पढ़ागला से जनागला कि वर्ल्ड राउंड अच्छी ओके वर्ल्ड सूर्य चारिपटे बुलुची ये सब जिन पढ़ाला ओके सेटा को से कहउछंती दिस मेड हर अनहैप्पी तो मु जते मॉडर्न जिनिस सब जो एक्वायर करूली मॉडर्न एजुकेशन एक्वायर करूली स्कूल रू एटा जते ग्रैंड माँ शुणिले तांको दुख लागिला कहीं दुख लगे तार दीटा कारण था बिकॉज शी इज ए रिलीजियस पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज ए रिलीजियस पर्सन एंड शी फाउंड दैट देर इज नो टीचिंग रिगार्डिंग द रिलीजियन ओके सेकेंड थिंग इज दैट मोस्ट वाइटल थिंग इज दैट शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माय लेसन्स ओके आउ गोटे जिनिस दुख हबार थिला कारण थिला कि से तांकर ग्रैंड चाइल्ड को तार लेसन रे हेल्प करि पारु नथिले जेहेतु कि जो सब जिनिस खुशवंत सिंह स्कूल रे पढ़ुले से सब जिनिस ग्रैंड मांकर आउट ऑफ रिच थिला बीइंग अ रिलीजियस लेडी शी वाज अनअवेयर रिगार्डिंग ऑल द मॉडर्न साइंस ऑल द वेस्टर्न साइंस लॉज ऑफ ग्रेविटी आर्किमेडिस प्रिंसिपल एंड दिस थिंग is completely unknown to grandma. That's why she could not help in the lesson of his grandson. That is one cause for his unhappiness, and another cause is that there is no teaching of religion. That's why grandma felt unhappy regarding the education of Khushwant Singh in modern English school or in English medium school. Let's start with the next paragraph. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lived associations. It was the monopoly of heralds and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. Okay, as we know that Khushwant Singh was admitted in English medium school, and at that school he learned all the modern thing, he learned all the western sciences and learning. Okay, and in that western sciences he acquired the education regarding English work, laws of gravity, Archimedes principle, etc and etc. Okay, and here all this thing distressed grandmother. Okay, when grandmother come to know that his grandson is pursuing all the education, modern education, except the education of religion and godly book, okay, that makes her unhappy. जेते बड़े ग्रैंड माँ जानिबा को पाइले कि इंग्लिश मीडियम स्कूल रे तांकर नाती को सब जो जिनिस पढ़ा जाउछि सेथिरे भगवान को विषय और रिलीजियन विषय कौन पाठ ना, स्क्रिप्चर विषय धार्मिक ग्रंथ विषय कौन पाठ ना, ये सब कथा शुणा पर से टिके डिस्टर्ब हो जाते, डिस्ट्रेस्ड हो जाते, दुखित होते से डिस्ट्रेस्ड हवा मीन्स दुख प्रकाश करुले से. ओके, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एजुकेशन ऑफ गॉडली एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन, and she was a very religious person. She has a great faith upon God. That's why she was unhappy that his grandson is not learning anything regarding religion and scripture. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. When Khushwant Singh comes to home one day and he announces that he was given music as his lesson, and after hearing this
after hearing that thing from his grandson, he became very much disturbed because grandmother considered that music had lewd associations. Okay, lewd association means it is a very bad thing, it is a very vulgar thing, असभ्य जिनिस से बोली भाबुले म्यूजिक टाकू से असभ्य लोक मानकर गोटे एसोसिएशन बोली भाबुले असभ्य लोक मानक एटा एप्लिकेबल बोली से भाबुले. ओके, लिवड मीन्स वल्गार असभ्य जोटा कहबा खराब जोटी कहबा. ओके, एंड इट वाज द मोनोपोली ऑफ हेरोल्ड्स एंड बेगर्स. ओके, एंड शी कंसीडर दैट इट इज मेंट फॉर. ओके, एटा मोनोपोली. मोनोपोली मीन्स कहबा एकछत्रवाद आमे कहि पारिबा, एगण आमे कहि पारे मनमानी भी कहि पारिया. मोनोपोली ऑफ हेरोल्ड्स एंड बेगर्स. हेरोल्ड्स कहा जाए सेक्स वर्कर को हेरोल्ड्स बोली कहा जाए. ओके, दोज हु आर वर्किंग इन ब्रोदेल्स आर नोन एज हेरोल्ड्स. ओके, एथिकल वर्क जो माने करंती दे आर रिगार्डेड एज हेरोल्ड्स. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू ग्रैंडमा, music is a vulgar association. Music is meant for heralds and beggars. Okay, and not meant for gentle folk. Gentle folk means gentleman. Okay, तो grandma भाबुले जो म्यूजिक टा अच्छी संगीत टा अच्छी ये सब होची खराब लोक मानकर पई उद्दिष्ट. ओके, जोटा कि हेरोल्ड्स माने एंड बेगर्स माने भिखारी माने ए माने से माने व्यवहार करती. एटा केबे सभ्य समाज पई नुहे. एटा ग्रैंडमांकर थिंकिंग थिला सी समय रे. दैट्स व्हाई जेते बेले ग्रैंडसन तंकर खुशवंत सिंह आसिक अनाउंस कले कि मते म्यूजिक लेसन दिया जाइछि, तो एटा सुनिबा क्षणी ग्रैंडमा टिके विचलित हो गले, तांको टिके खराब लागिला, से दुख जाहिर कले एंड डिस्टर्ब भी से हो गले. She said nothing but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that incident. तो से यही संबंध रे किछि कहिले नाही ग्रैंडसन को, खुशवंत सिंह को, कहीं तांकर किछि कहिबार नाही. जेहेतु खुशवंत सिंह फादर अछंती से तांको इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पढ़ौछंती. बीइंग ए ग्रैंड मदर, शी हैज़ नो 100% राइट टू टेल एनीथिंग रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ हिज ग्रैंडसन. दैट्स व्हाई शी रिमेन साइलेंट एंड हर साइलेंट मीन्ट हिज डिसअप्रूवल. डिसअप्रूवल मीन्स असम्मत प्रकाश करिवा, मीन्स से सम्मति दे नथिले कि से चाहू नथिले कि तांकर ग्रैंडसन खुशवंत सिंह ए सब जिनिस मॉडर्न जिनिस जोटा कि असभ्य लोक मानकर जिनिस संगीत ए सब निजे अख्तियार करू, निजे शिखु बोली. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट इंसिडेंट. एई घटना परे ग्रैंडमा कंप्लीटली साइलेंट हो गले. कहले बहुत कम. रेयरली मीन्स आमे जोटा को आमे कहबा क्वचित आमे कहि परिबा बहुत कम. आवश्यक हेले कथा होतले न अथवा टोटल कथा हो नथिले ता सहित खुशवंत सिंह का सहित. दैट मीन्स हियर after the announcement of Khushwant Singh that he was taught music in the school, after that incident the relationship between grandson and grandmother is in a disturbance position. Okay, and she accepted, grandmother accepted loneliness, and she found herself in isolation, and she thought that it will be better in her part to remain silent. That's why she remained silent on that matter. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. For sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the braids into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. She came and perched, some came and perched on her legs, other on her shoulders, some even sat on her head. Some smiled but never shouted, she smiled but never shouted them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. तो ये कहले ऑलमोस्ट जो लिंकटा थिला ग्रैंडसन एंड ग्रैंडमा भितर, जेहेतु इंग्लिश मीडियम स्कूल रे से पढ़ुले. ओके, एंड राति रे जते संध्या बेले रिटर्न करूले ग्रैंडमा सहित तांकर टिके कथावार्ता होतला. बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज स्कूल एजुकेशन, द राइटर खुशवंत सिंह प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू pursue higher education in university. That's why
he has to left the home for his higher education. When I went to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. तो कहले मु जिते बड़े यूनिवर्सिटी एजुकेशन परस्यू करने गली घर बाहरी तो मत हॉस्टेल रे रहिबा को पड़ला. आई वाज गिवन ए रूम ऑफ माय ओन मीन्स कॉलेज रे मते गोटा सेपरेट रूम दिया गला जो थे कि मु रही कि मोर एजुकेशन टाको कंप्लीट करि परिबी. ओके तो इथि जो कॉमन लिंक थिला ग्रैंडमा का सहित मोर जो थिला खुशवंत सिंह कहउछंती सेटा कंप्लीटली स्नैप्ड हे गला. स्नैप्ड मीन्स छाड़ी गला. ओके छड़ई नबा को आम कह स्नैप्ड बोली कहवा दैट मीन्स ये भांगी गला तांकर जो कमन रिलेशन थिला कि इवनिंग रे स्कूल रे जतले पढुतले सिटी स्कूल रे इवनिंग रे घर को आसुतले ग्रैंडमांकर सहित भेटा भेटी होतला देखा चाह होतला. बट एडी तो से घर छाड़ी की यूनिवर्सिटी हॉस्टेल रे रहिले आउ ग्रैंडमांक सहित फेस टू फेस आउ देखा हबो नाही. जो भी रिलेशन थिला लिंकिंग थिला जो बॉन्डेज थिला बॉन्डिंग थिला सेटा कंप्लीटली भांगी जाइतला. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion को कहा जाए loneliness, isolation को कहा जाए solitariness को कहा जाए seclusion. Okay, with resignation. Resignation means सबु जिनिस को विरति दे देथिले. Okay, that means after Khushwant Singh's departure from his home for pursuing higher education and remain in the hostel, that incident makes a tremendous mark in the mind of grandmother, and after that his grandmother accepted seclusion by with resignation. means घर सबु जिनिस को पछरे पकईकी से निजे को आइसोलेट करदेले गोटे कोठरी मध्य निज को आबद्ध करदेले. घर कौन सी काम करिवारे मीन्स इच्छा प्रकाश कले ना क्या सहित कथबार्ता कले ना कि कले ना दिन राति से गोटे कोठरी बसी कोठरी रे बसिकी रहिले. कहीं ये जो खुशवंत सिंह जिते घर गले यूनिवर्सिटी को गले ये जो जीवाटा डिटाचमेंटा ग्रैंडमा को माइंड उपर साइकोलॉजी उपर बहुत बड़ गभीर आघात पहुँचेला. जेहेतु वी ऑल नो दैट ग्रैंड पेरेंट्स दे ऑलवेज लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रेन. ओके they never accept the separation with their grandchild. Okay, and here in this case grandmother become very much disturbed and shattered in his psychology, in his emotion after the means departure of Khushwant Singh for the pursuing of higher education. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. तो सी जो घर जिते निजक गोटे कोठरी आबद्ध करते ग्रैंडमा से बसी करूले कौन स्पिनिंग व्हील मीन्स अरटरे सूता काटुले सूता तैयारी से करूले. ओके एंड शी रियरली टॉक टू एंड शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील मीन्स बहुत कम क्वचित जो अति आवश्यक होता से स्पिनिंग व्हील टाक सूता काटे अरटर को छाड़ी बाहर को आसुले क्या सहित कथबार्ता होते अन्यथा से केवे भी क्या सहित कथा हो ना आवश्यक न पड़े. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. तो खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी जीवा परे ग्रैंडमा गोटे काम रही जाइतला कि से सनराइज ठारू सनसेट पर्यंत निजको गोटे कोठरी आबद्ध करके रखुले एंड निजर स्पिनिंग व्हील सूताटा से तैयारी करुले अरटरे सूता तैयारी करुले चैरियटरे एंड तापर से इनऑडिबल प्रेयर्स भी पार्टी चली यही कामटा से करुले. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज. ओके केवल आफ्टरनून रे से निजर स्पिनिंग व्हील टाक छाड़ी बाहर को आसुले वेरेंडा को आसुले निजर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जोटा कि से गाँव रे से स्क्रिप्चर पढ़ी मंदिर रे एंड स्ट्रीट डॉग मान को खाद्य खोईकी से आनंद पाउले क्वालिटी टाइम मेंटेन करुले किंतु ये स्ट्रीट डॉग नथिले बाहर को जीवा पड़ू नाला से आफ्टरनून रे निजर आइसोलेशन रूम रू से बाहर की आसुले बारेंडा रे बसुले जोठे कि शह शह संख्यार स्पैरोज माने आसुले से स्पैरोज मान को फीडिंग से करुले छोट छोट ब्रेड टाक कुंड करके काटिकी छोट छोट करके दौले. While she sat in the veranda, breaking the bread into little beads, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Okay? जिते बड़े ग्रैंडमा वरेंडा रे बसिकी ब्रेड टाकू छोट छोट खंड करुले स्पैरोज मानक से समय रे थाउजेंड्स हंड्रेड्स नंबर्स ऑफ स्पैरोज दे गैदर्ड दे कलेक्टेड राउंड हर. ग्रैंडमा को चारिपटे बुलिकी सब स्पैरोज माने बसुले. ओके एंड दे क्रिएट वेरिटेबल बेडलैम. बेडलैम कह जाए अ नॉइज मीन्स अ नॉइज
जोटा कि आम केवे जानीपारानी कहार वॉइस केतबेले आसूची आम कहीपर क्याओस कहीपर नॉइज ऑफ कन्फ्यूजन कहीपर मीन्स एका सांगे बहुत गुड़ाए सोर्स शब्द शुणा जावाकू क्याओस बोली कहुए बेडलैम बोली कहुए तेतबेले शह शह संख्यार स्पैरोज माने एकजुट होते जो किचिरमिचिर राबटा को बेडलैम बोली कहुए तो ग्रैंडमा जितेबले से रुटीटा भांगिकी प्रिपेयर करुले से ग्रैंडमा को चारिपटे कौन करुले बसुले से किचिरमिचिर करुले एंड दे आर क्रिएटिंग चिरपिंग्स मीन्स दे आर साउंड से क्रिएट सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग अदर ऑन हर शोल्डर्स ओके किछि घर चटिया पर्च्ड करुले पर्च करिया मीन्स ओल्हेबा ओके जिते प्लेनटा ओह्लाए ताकू लैंडिंग बोली कहुए कौन पक्षीटा जिते ओह्लाए गछ डाल कि चटाण कि भूई रे बसे ताकू पर्च्ड बोली कहुए लैंडिंग करवा पक्षी लैंडिंग करने को पर्च्ड बोली कहुए सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स अदर ऑन हर शोल्डर किछि तांकर ग्रैंडमा गोड़ उपर बसुले पक्षी माने स्पैरोज माने एंड किछि तांको कांध उपर आसिकी बसुले सम इवन सैट ऑन हर हेड किछि पक्षी ग्रैंडमा हेड्रे मुंडरे भी बसुले शी स्माइल बट नेवर शाउटेड देम अवे ग्रैंडमा एते हैप्पी थिले से कंपनी रे स्पैरो मान कंपनी रे तो जिते स्पैरो माने तांकर बॉडी ऊपर आसिक बसुले शरीर ऊपर बसुले ग्रैंडमा केबे भी तांको गोड़ौ नथिले ओके शी नेवर शाउटेड अवे देम अवे तांको गोड़ेकी उड़ौ नथिले but rather she spent a quality time in the companionship of what to whom sparrows. It used to be the happiest half hour of the day for her. तो ये राइटर कहते से जो हाफ एन आवर से यूज करुले स्पैरोज मान को फीडिंग करने दैट इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ ए डे एव्री डे रे से जो अध घंटाटा स्पैरोज मान पक्षी मान बिताऊले सीटा तांकर सबुठ हैप्पीएस्ट आवर एंड क्वालिटी टाइम थिला एंड रेस्ट ऑफ द टाइम शी रिमेन इनसाइड अ रूम एंड मेक हर सेल्फ आइसोलेटेड ओके एंड दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड यूनिट ऑफ The Portrait of a Lady.